सामने। आज मैं यहाँ ये वीडियो शिलोंग से बना और आज 1 जून 2023 है और यहाँ पे मैं एक मेडिकोलीगल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ जिसमें मेरा एक प्रेजेंटेशन भी है। तो ये कल का सफ़र काफ़ी टफ़ था, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं और बैकबोन हैं डॉक्टर आदर्श कुमार, एम्स न्यू दिल्ली, उन्होंने काफ़ी भरसक प्रयास करके सभी को बड़े अच्छे सुरक्षित तरीके से, आरामदायक तरीके से यहाँ तक पहुँचाया। और ये हम कॉन्फ्रेंस की साइट पे पहुँच चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कॉन्फ्रेंस ये है 12th IAMLECON 2023 और ये शिलोंग है, मेडिकल कॉलेज शिलोंग। तो मेडिकल कॉलेज क्या देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और ये जैसा दूर दराज एरिया है शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसके हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कुछ मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कुछ अभी सुबह सुबह एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अब ये देखना है कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, कि किस किस तरह के यहाँ टॉपिक्स डिस्कशन होगा फोरेंसिक और मेडिकल ऑफिसर्स को लेके, और किस किस तरह की चीज़ों में और क्या आउटपुट निकलता है। Day 1st. Scope and evolution of forensic nursing. Science. Exposure to forensic nursing practices in different criminal scenarios. Practical session on basic requirement for setting up an analytical toxicological laboratory. Principles of analytical toxicology. Sampling and analysis of drug of abuse. Documentation and reporting in a toxicological lab. Overview of virtual autopsy. Virtual autopsy in diagnosis sudden cardiac deaths and PMCT. Angiography. 3D reconstruction and virtual dissection. Crime scene management. Responsibilities of the responders. Sample collection methods. Documentation of the crime scene. Report writing and discussion. Day 3. The history of expert witness. Avenues beyond autopsy practice. How to avoid negligence suits. Journey to the space forensics. New perspectives of skin lesions in forensic practice. Establishing consistent and catalytic quality assurance mechanism in hospitals/laboratories. Medical rehabilitation during disaster. Challenges in getting manpower. Medicolegal investigations coupled with forensic psychiatry. Drug abuse. Impact of stress on police personnel and remedial coping mechanism. Role of bispectral index in narcoanalysis. Modular teaching in forensic medicine. Dental bioarchaeology for forensic identification. Fingerprints. Automated estimation of chronological age. Cognitive bias. Laws related to environmental protection. Legal issues in adventure sports and patient transport. Forensic discrimination of condom lubricants. Forensic pharmacology. Fatal consequences of inadequate investigations. Death by choking. Body below the train. Accident by road and lighting. Destiny's Child. Melioidosis. Autopsy hindrance. Histopathology. Molecular autopsy. Estimation of time since death. Vicarious liability. Autopsy comparison. Virtual autopsy in India. Preliminary study on dental age estimation. Development of a questionnaire. Challenges faced by forensic department. Age estimation. Odontometric analysis. Correlation of stature with hand length. Forensic anthropology for disaster. Establishment of regression formula. Estimation of age. Road traffic accidents. A black and blue tail. Survives. Post-traumatic stress disorder. Sudden cardiac death. Suspected carbon monoxide poisoning. The green vein.
Day 4. Humanity in Danger. Study of crush injuries. Traumatic subdural hemorrhage. Insecticides. Amniotic fluid embolism. Study of cyber-psychology. Indian body farm, umbrella scheme for investigation and research. Disaster victim identification. Sexual assault cases. Right to health. Clinical trial rule. Psychological autopsy. Application of PMCT. Tomography angiography in virtual autopsy. Virtual organ volume try. Conventional autopsy versus virtual autopsy. Multiple fatal stab wounds. Role of histopathological examination. Estimation of stature from foot length. Revelation of the unseen eye. Danse macabre. Silent suffocation. Slashed throat and broken heart. The deception. Love costs life. Estimation of sex and stature. Forensic stature estimation. Meadow score. Congenital heart defects. PAHs in the environment. Health hazards. Forensic expert opinion. Vertipsy. Analysis of body fluids in forensic science. Study of the pattern and severity of injuries. Dilemma of the general surgeon. The unconvincing fate of chyloscopy. Risk assessment in victims of gender violence. Liver transplant recipients. Prevalence estimates of symptoms. Does the submersion of diptera pupae affect the estimation of the MPI? Pathomechanical analysis of homicidal crude bomb blast injury, a case report. A clandestine affair. Vehicular manslaughter. Café coronary syndrome. Study of female infanticide. Mysterious death. Corrosive acid poisoning. Hanging and atypical injuries. Electrical injury death. Narcoanalysis. Strangulation. Death due to retained placenta. A curious case of suicide. Sudden death in bathroom. Homicide by combination. Sudden death. Unusual facial wound. Autopsy and criminal justice. Diagnosis of death. Suicide by firing. DNA extraction. MBBS curriculum in Ukraine and India. Cardiac tamponade. Suspected hemorrhage. Distribution of cases. And analysis of clonazepam. ये आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस में किस तरह से ये कुछ हेल्प डेस्क और डायरेक्टरेट फूड प्रोसेसिंग, ट्रस्टेड रिसोर्सेज और मेघालय टूरिज़्म का ये एडवर्टीज़मेंट और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये बिल्डिंग को बनाया गया है और बहुत बेहतर तरीके से इंस्टीट्यूट को सजाया गया है। और यहाँ पे 2 हॉल में अलग अलग सेक्शन के हिसाब से जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, टॉपिक्स है, उसको अरेंज किया गया हॉल ए एंड हॉल बी में। तो अभी मॉर्निंग टाइम में सेक्शन हॉल ए में बर्ड सेल ऑटोप्सी और हॉल बी में आई थिंक फोरेंसिक नर्सिंग के बारे में उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और जैसे जैसे में ऐसा रहेगा कि शेयर करना है उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।